Hey everyone, hope you're doing well. Wondering about patterns in C? Why not? They look stunning after all. But wait. इतने सारे patterns, does that mean बहुत सारी methods? Definitely a big no. In this video, I will be sharing some very simple yet super effective techniques for pattern printing in C. Just a single change in program would jump you to the next pattern. So, why to do any more delays? Let's roll up our sleeves and get started. Here, I have divided the patterns in various types just for better understanding. But don't worry, all the types go by a single logic. So, our type 1. इसमें अगर ध्यान से देखें तो all the rows contain same value. Let's code our pattern and understand the logic behind it. तो सबसे पहले our main body. अब पैटर्न प्रिंटिंग के लिए लूप. अब लूप्स कैसे लगाना है? तो यहाँ पर दो लूप्स लगेंगे. एक रो के लिए विद इटरेशन आई और दूसरा कॉलम के लिए विद इटरेशन जे. हम सबसे पहले जे को डिक्लेयर करते हैं. एज वी सॉ इन आवर पैटर्न 1 हमारी फर्स्ट कॉलम में है. So here j equals 1 implies first column must start with 1. अब now j less than or equal to 5. मतलब हर कॉलम में 1 से लेकर 5 तक वैल्यू होनी चाहिए. नेक्स्ट j को हर रो में इंक्रीज करने के लिए j प्लस प्लस. अब हम i को डिक्लेयर करते हैं. सो सिंस हमें 5 रोज चाहिए इसलिए i को 1 to 5 लिमिट देंगे एंड एन अपडेशन स्टेटमेंट एट लास्ट. रिमेंबर j लूप हमेशा i लूप के अंदर होगा. सबसे पहले i लूप चलेगा फॉर प्रिंटिंग द फर्स्ट रो सिंस कंडीशन ट्रू है. कमांड जाएगा j के पास जिसका वर्क है 1 2 3 4 5 को प्रिंट कराना सेपरेट रोज में. सो लेट्स गिव द प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रिंट f देन इन द इन्वर्टेड कोड्स परसेंटेज d कॉज इंटीजर है देन j कॉज हम j को प्रिंट करवा रहे हैं. दैट्स इट. वेट कर्सर को नेक्स्ट लाइन में बुलाने के लिए \n वाली स्टेटमेंट भी डाल देते हैं. हाँ, फाइनली डन विद आवर कोड. लेट्स चेक आउट आवर फर्स्ट पैटर्न. ये गॉट इट राइट. अब ये तो हो गया. अब मुझे नेक्स्ट पैटर्न प्रिंट कराना है. उसमें फर्स्ट रो में 1 को 5 बार, सेकेंड रो में 2 को 5 बार एंड दैट गोज ऑन टिल द लास्ट रो जिसमें 5 को 5 बार प्रिंट कराना है. लेट्स क्विकली मेक अ स्मॉल चेंज इन आवर प्रोग्राम. सो हेयर j को हटाकर हम i प्रिंट करने बोल देंगे. दैट्स इट. लेट्स रन दिस. सो गॉट द सेकेंड पैटर्न. अब एस्ट्रिक मतलब स्टार प्रिंट करवाना है. अब चाहो तो इसमें अब i को ही प्रिंट करवा लो या j को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बस एक चीज़ चेंज करनी है. परसेंटेज d की जगह स्टार पास कर दो. हाँ, दैट्स इट. रन इट नाउ. सो गॉट आवर थर्ड पैटर्न. नाउ द फोर्थ वन. उसमें हमें अल्फ़ाबेट्स प्रिंट कराने हैं. सो परसेंटेज d की जगह ऑब्वियसली परसेंटेज c आएगा और इस बार सिर्फ j नहीं होगा, j प्लस 64 होगा. कॉज a की s का वैल्यू होती है 65 तो j प्लस 64 में वो इंक्रीज होता जाएगा. रन इट. गॉट आवर फिफ्थ पैटर्न. नाउ अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. j की जगह i रन करवाना है. सो गॉट a in each column of first row then b in second row and so on. अभी तक का गेम तो एकदम मस्त चल रहा था. अब थोड़ा सा चेंज. अब रिवर्स में मतलब
5 4 3 2 1 ये प्रिंट कराना है हर रो में। लेट्स वर्क ऑन दिस नाउ। तो यहाँ सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में 5 है, सो j इक्वल्स 5। देन लास्ट कॉलम में 1, सो j ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब j माइनस माइनस कॉज डिक्रीज करना है। हाँ, रिमेंबर वन थिंग, अगर माइनस माइनस है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगा, और अगर प्लस प्लस है तो लेस देन इक्वल्स टू। मतलब जब इंक्रीज करना है तो लेस देन यूज़ करो, जब डिक्रीज करना है तो ग्रेटर देन यूज़ करो। अब आई होप इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ अगेन रोज तो 5 ही होंगी और हर रो में रिवर्स में प्रिंट करना है, सो I equals 5 until I greater than or equal to 1, decrease I by 1, and again print वाली स्टेटमेंट और बैकस्लैश वाली स्टेटमेंट तो एकदम सेम है। डन। लेट्स चेक दिस आउट नाउ। सो गॉट द फिफ्थ पैटर्न। सो नाउ अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप पर। इसे देखा जाए तो सारे लेफ्ट साइडेड शिफ्ट हैं। लेट चेक आउट द कोड फॉर दिस नाउ। सबसे पहले पूरा टाइप 1 जैसा बेस कोड। नाउ सिंस फर्स्ट कॉलम में सारे वैल्यूज़ 1 हैं, सो j इक्वल्स 1। देन अब अगर डायगोनल चेक करें तो इट्स ऑल डिफरेंट एंड प्लस इट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 5. Since different, we will use I, and for increasing j less than equals to 1 and last j plus plus. अब I को डिक्लेयर करते हैं। सो हमारा I 1 से 5 जा रहा है, hence I equals 1 until I less than equals 5 and keep on increasing I by 1, so I plus plus. Then the same printing statements. Done. Let's run this. So got our sixth pattern. Now next 1 first row में एक बार, then 2 second row में 2 बार, and so on till last. इसके लिए a single change, j की जगह I. Run this. So got our seventh pattern. नाउ एस्ट्रिक प्रिंट करने के लिए कुछ नहीं करना, बस सिंपली परसेंटेज डी की जगह स्टार पास कर दो। चेक दिस वन नाउ। सो गॉट आर एट्थ पैटर्न। नाउ अल्फ़ाबेट्स 1। उसके लिए वी नाउ नो दैट परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी और जे की जगह जे प्लस 64। बस दैट्स इट। रन दिस वन नाउ। सो गॉट आर नाइन्थ वन। अब वापस से रिवर्स वाला गेम, बट दिस टाइम वी नो इट्स वेरी सिंपल, राइट? सिंस फर्स्ट कॉलम में सब 5 है, इसलिए j इक्वल्स 5। देन डायगोनल देखें तो ऑल डिफरेंट एंड ऑल्सो इट्स डिक्रीजिंग, सो j ग्रेटर देन इक्वल्स टू I, देन j माइनस माइनस। अब सिंस डायगोनल में 5 to 1 डिक्रीज हो रहा है, हेंस I इक्वल्स 5, I ग्रेटर देन इक्वल्स 1 and last I minus minus, and then printing statements. Run this. So got our 10th pattern now. Now coming towards type 3. So here as first column में values are different, so j equals 1. अब करते हैं I को डिक्लेयर। सो वैल्यूज जा रही हैं 1 to 5 in increasing order. So I equals 1, then I less than equals to 5 and I plus plus. अब diagonal देखें तो it's all 1 over there. Hence j greater than or equal to 1 and j minus minus. Then our printing statements as usual. So got our 11th pattern.
एंड देन परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज सी एंड जे में 64 ऐड कर दो. रन दिस वन नाउ. सो गॉट आर 12th पैटर्न नाउ. मूविंग टवर्ड्स आर फोर्थ टाइप. इधर since first column contains 5, so j equals 5. Then diagonal contains all different and plus it's decreasing, so j greater than or equal to I and j minus minus. Now declaring our I iterator. So here I goes on decreasing from 5 to 1. So I equals 5, then I greater than equals to 1, and last one I plus plus. Same printing statements. Let's run this one now. So got our 13th one. Now a small change. Percentage C and J plus 64 for 14th pattern. Run this one. Yep. Got our 14th pattern. So are you getting the logic behind all this pattern printing game? It's almost the same for all, right? So let's finish our rest of the patterns too. Yes. So now type fifth. Here first column में सिर्फ 1 है. So j equals 1. Then diagonal check करो. It's different, right? And plus the values in a row is increasing. So j less than equals to I and j plus plus. Now I की बारी. So diagonal देखो. It's decreasing from 5 to 1. So I equals 5 until I greater than or equals to 1 and keep on decreasing it by 1. I minus minus. Again printing statements. Run this out. So got our 15th pattern. Now for alphabets percentage C and J plus 64. Done. Run it. Yes. Got our 16th pattern. Now next type 6. So here just 5 in the first column. Hence J equals 5. Then diagonal में it's different. And since values are decreasing in a row, so j greater than or equals to I and j minus minus. Now वापस से diagonals check करो. It's increasing from 1 to 5. Hence I equals 1 until I less than equals to 5 and I plus plus. Same printing statements. Check this out. So got our 17th pattern. Now again for alphabets use percentage C and J plus 64. Done. Run this now. Yes, got our 18th pattern. Now next type 7. So here since first column contains different values, J equals I. अब I देखे तो since in first column it's going from 1 to 5, hence I equals 1 up to 5, keep on increasing by 1. Now diagonal check करो. Since it contains 5 all over and in a row, if we see the values are increasing from right to left, hence j less than or equals to 5, then j plus plus. Again our printing statements. Run this one now. So yes, got our 19th pattern. Now again for alphabets percentage C and j plus 64. Done. Run this one now. Yes, done with our 20th pattern. Now moving towards our type 8, and here since first column have a different value on moving down, so j equals I. Now declare I. Since values are decreasing from 5 to 1 up to down, so we will pass I equals 5, I greater than equals to 1 and I minus minus. अब
Since in the diagonal it's 1 all over, and plus it's decreasing in a flow from 5 to 1. On moving right, hence j greater than equals to 1 and j minus minus. Then same printing wali statements. Done. Let's check this one out. So, got our 21st pattern. Now for alphabets, again percentage %c and j plus 64. Run this. Done with our 22nd pattern finally. I hope this video gave you a solid foundation for creating patterns in C. Remember, programming is all about creating and solving problems. Keep on practicing and experimenting with different patterns. And don't be afraid to try new things and clarify your doubts. Thank you.